और सृष्टि एस मोरे ध्वज ग्रहण करते हुए वो गौरवशाली क्षण इन कैडेट्स के लिए। और आप जानते हैं ये दृश्य, ये क्षण। I was on the ninth floor, to be honest. You have to keep your head high, no matter what the situation is. सुबह जल्दी उठना पड़ता था ड्रिल के लिए, and I won gold that time. So it was bronze, and then gold for me. We are so proud of you. So I teach around 80 to 90 students. That is personally my class, and then our academy overall has more than 27 plus branches in Chinchwad पूरे year. And 5,000 से भी ज़्यादा बच्चों को हमने कराटे के लिए ट्रेन किया है. Everything that I do is, see the smile on my mom's face. आपका क्या वो एक मैसेज होगा टू ऑल द यंग गर्ल्स आउट देयर? आज की एपिसोड की गेस्ट कौन है ये तो अभी तक आपको पता चल गया होगा. जी हाँ, बिल्कुल. इनका नाम है सृष्टि मोरे. सृष्टि is a girl which is full of energy. She's bubbly, self-independent, self-assured, dedicated और determined लड़की है. सृष्टि बहुत young है, but already she has achieved so much, माशाल्लाह से. सृष्टि एक कराटे चैम्पियन है. She runs many of karate schools. She's a very popular NCC cadet and is also prepping to get into the Indian Army. So in short, अगर सृष्टि के बारे में बोला जाए तो she's a very good example for many young girls out there. She surely is one for me. So जाएगा नहीं, अभी पूरा एपिसोड बाकी है. So head on. Hello and very warm welcome to you, Srishti, at Vichar Vibe Studio. So happy to have you here. Thank you for being here. How are you doing today? Good morning. I'm fine, and thank you for having me. It's an honor to be here. Srishti, I want to talk about 26 January. Maharashtra won the PM banner this year, and probably it was a hat-trick. And you had the honor to receive the PM banner from Honorable Prime Minister Modi. Tell us about that. How was the feeling? What were you feeling at that moment? What led you to that moment? I was on the ninth floor, to be honest, and I was in the best period competition in the part of DC, that is the Republic Day camp. So then being a part of that in the period, I was All India Rank 2 in it. I was selected from the directorate to receive the banner from our PM. So for me, it was a moment which I'll not forget. And, all the hard work of 7 to 8 months that I had put in. So it all paid off in the end when I was receiving the banner, and I was very, the feeling was, I was proud and happy, much happy. Even when I looked at the picture, I was super happy. I remember I had tears in my eyes, and I kept thinking, I don't even know Srishti personally. Why is it that I have tears? And I'm sure you have given that feeling to many women in India. We are so proud of you. And yeah, thank you for doing that. Let's go back a little bit. How was your experience in the NCC? What did you learn in your experience there? What did you learn that you can keep with you for the rest of your life? So NCC is National Cadet Corps, and I joined NCC when I was in the first year of my LLB. In the first year of NCC, it was just learning. As being a first year cadet, you just have to learn. You have no camps or anything like that. When you come to the second year, that is when you actually start to choose the camps and you get to participate in them. So I volunteered for the Republic Day camp. I had already decided this, that the camp that I'm going to do is Republic Day camp. And the event was also decided for me. It was either Best Cadet or nothing at all. So Best Cadet was an event in that camp as well. So how NCC helped me throughout this journey, and again to grow my personality per se, is
I could improve on my soft skills a lot. I was able to communicate effectively with people, which before I used to think a lot, or there were some restrictions or something like that, because I was not able to have a conversation as good as I can now. So that is one thing. I was not able to express back then so efficiently, but now I can. Third thing would be, I learned is to constantly believe in yourself throughout the process. That is, you have to keep your head high no matter what the situation is. And fourth takeaway from NCC up till now would be that it has made me mentally strong. And the routine that we are put through in NCC is actually helped me become more disciplined. And I would not like to prefer passing time just like that. I would want to do something fruitful and make the best possible use of time, or the 24 hours that I get in a day. So then this is what I've learned from NCC till now. I want to double click on a few things there. How is it wearing that uniform every day from morning to evening? Wearing a uniform, first thing is that you stand out from a crowd of people, right? And after that, it is you become more responsible when you're wearing that uniform, because the uniform stands for responsibility, I feel. In army, if we speak about the uniform, it is you lead people, you take responsibility for all of your teammates, like that. So then for me, uniform is something which is a very responsible thing, and the feeling of pride is different, and you stand out. Definitely you do. सृष्टि, आज आप यहाँ पे है, बट ये सब का बीज कहीं आपके बचपन में बोया गया था, राइट? आप एक कराटे चैंपियन हो, एशियन चैंपियनशिप में आप पार्ट ले चुके हो, नेशनल मेडलिस्ट हो. टेल अस अबाउट दैट जर्नी. हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड विद कराटे, एंड देन फ्रॉम कराटे व्हाट वाज योर जर्नी टिल एनसीसी? मैंने कराटे जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब शुरू किया था, और इसके पीछे रीजन थी बिकॉज माई मॉम आस्क्ड मी टू ज्वाइन कराटे. तो क्लासेस तो स्कूल में ही होती थी, तो देन आई ज्वाइंड कराटे क्लासेस देयर. आई स्टार्टेड इट. In the first year, I was just learning, and I even participated in a tournament. Then I lost it in the first match itself. मेरा नाक भी ये हो गया था, मतलब my nose had started bleeding that time because of the blow. Punch hit me on my nose that time. तो तब तो ऐसे हो गया था कि first match थी और ऐसे हो गया है. But then I was strong, and then my mother was all worried that time कि ये क्या हो गया, first match है और बच्ची को लग गया है, खून आ रहा है. She was all ऐसे in panic mode. But then I told her कि नहीं कुछ दुख वगैरह नहीं रहा है, it's okay, you stay out. तो पानी वगैरह डाल के थोड़ा से वो ठीक हो गया, and then I played, but then I lost. तो उससे मैं सीखी, and that was the first time मैं as a मतलब at a professional level I participated in a tournament. तब मुझे समझ में आया कि अगर ये फील्ड में if I want to go ahead, तो इतने प्रैक्टिस से तो नहीं होने वाला है. I have to start working on myself more, और थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे इस गेम के लिए. तो दैट इज़ द टाइम आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एकदम अच्छे से, एंड पूरा एफर्ट्स लगा के. एंड इन द नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द स्टेट्स. तो मैं स्टेट्स में सिलेक्ट हो गई, एंड आई इवन वन अ गोल्ड इन वन ऑफ द इवेंट. आई वाज सिलेक्टेड फॉर 2 इवेंट्स, काता एंड कुमिते. एक में मैं हार गई बिकॉज दैट वाज नॉट माई इवेंट, इन द सेंस कि मैं उस इवेंट के लिए बनी ही नहीं थी. द सेकेंड इवेंट दैट इज कुमिते, दैट इज फाइट. सो एंटायर योर बॉडी टाइप और इवन जो आपका दिमाग चलता है, तो देन माई दिस वॉज ऑन दैट साइड. सो फाइट में था मेरा. वैसे काता मेरे बस की बात है, बट नॉट एट दैट प्रोफेशनल लेवल. तो फिर मैं कुमिते में मैं जीत गई और मुझे गोल्ड था. बट उस साल मैं नेशनल्स के लिए नहीं जा पाई बिकॉज आई वॉज द ओनली गर्ल फ्रॉम आवर क्लास हु गॉट सिलेक्टेड फॉर द नेशनल्स. एंड तो कोई और लेडी कोच भी नहीं थी. सो देन आई वॉजंट एबल टू पार्टिसिपेट. अदरवाइज मैं उस साल खेल लेती जब मैं 5th में थी नेशनल. तो कराटे उस टाइप से मेरा शुरू हो गया फिर. एंड उसके बाद देयर वाज कंटिन्यूअसली द ग्राफ वाज गोइंग अप. ऐसे इन 8th स्टैंडर्ड स्कूल गेम्स में कराटे आया. तो स्कूल गेम्स इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टूर्नामेंट, ठीक है. उनके एफिलिएशन में मतलब गवर्नमेंट एफिलिएटेड गेम्स होते हैं ये. तो उसका बेनिफिट्स ऐसे होता है कि आफ्टर 10
you can apply through sports quota in any college that you want to seek admission in, or you can also get grace marks in your 10th boards. जैसे then उसमें I got selected first district level, उसके बाद state level, and after that is national. तो first national जो मैंने खेला स्कूल गेम्स का, I lost. और तब मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि सामने वाला प्लेयर आया कब, मैच स्टार्ट कब हुई, खत्म कब हुई. मतलब वो मुझे अभी भी याद है कि मतलब आया वो प्लेयर, खेला और गया. वो टाइम कैसे गया वो भी मुझे याद नहीं, बिकॉज इट हैपेंड सो फास्ट. और मैं हार गई थी तब, बहुत बुरी तरीके से हार गई थी. तो आई डिड नॉट टेक दैट वेरी वेल बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टूर्नामेंट 4th स्टैंडर्ड के बाद कि आई लॉस्ट. अदरवाइज आई वाज जस्ट गोइंग ऑन विनिंग. तो दैट level of national was a bit different than the other association nationals that I had played. तो तब वापस realization हुआ कि इतने practice से नहीं होने वाला है और practice करनी पड़ी. So then I started again working on my shortcomings in karate, or I came back stronger. So in 9th I again got selected. So then that time I won bronze medal. So then I am 2 times bronze medalist in SGFI. उसके बाद ये तो होते रहा simultaneously. I passed my 10th, 11th and 12th I continued with the sport. 12th standard में जब मैं थी, I played in the association national that time. तो इसके ये games के through selections take place for the international tournaments in that year. So may it be the South Asian Championship, Asian Championship, Commonwealth Championship and so on. तो वो games के through उसका selections होता था. So then I again won at the district, state and I got selected for the nationals. So at nationals I was in the junior category. Girls junior category, 16 to 17 years, and I won gold that time. So it was bronze and then gold for me. और ये 12th standard में हो रहा था, तो simultaneously मेरे मतलब जो boards का तैयारी था 12th के, even that was I had to balance that as well. तो वो शुरू था, तो मैंने prelims miss कर दी इसके ये nationals के चक्कर में. मेरा prelims पूरा miss हो गया था, and but it was worth it because I won gold here. उसके बाद I got selected for the Asian Championship. I came back, I started practicing. I had February में nationals थे, so I had March, April and May में I had the Asian Championship. So I had 2 months for practicing, and मतलब बहुत ज़्यादा अलग एक experience तब हुआ, क्योंकि जीतने के बाद I came to realize now I'll be playing for my country. So it was a very different experience and बहुत ज़्यादा खुश थी मैं तब. दृष्टि, आपकी खुद का एक एकेडमी है. हमें आपके खुद के एकेडमी के बारे में बताइए. आपके स्टूडेंट्स, मैंने देखा है छोटे से बच्चे से कोई कार्ड आपने एक पोस्ट किया था, विच वाज सुपर स्वीट. आपके उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताइए. सो ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस है या फिर एकेडमी में, एकेडमी हमने 6 साल हुए पहले स्टार्ट की थी. नाउ इट्स बीन 6 years कि आई वेंट टू दिस टीचिंग प्रोफेशन ऑल्सो. स्टार्टिंग में इतने स्टूडेंट्स नहीं थे, बट जैसे जैसे ग्रोथ होते गया, पब्लिसिटी होते गई, तो वैसे वैसे बच्चे भी बढ़े हैं अभी. तो आई टीच अराउंड 80 to 90 स्टूडेंट्स. दैट इज पर्सनली माई क्लास. एंड देन आवर एकेडमी ओवरऑल हैज मोर देन 27 plus ब्रांचेस इन पिंपरी-चिंचवड पूरे ईयर. एंड 5000 से भी ज़्यादा बच्चों को हमने कराटे के लिए ट्रेन किया है. तो जो मेरे क्लास के बच्चे हैं, so they're so cute, and I have kids from 3.5 years plus till 16 years abhi filal. So then every small kid, you know, they will get something from me every day. So one of my students, her name is Paridi, and the other one is Chinmaya. So what they both do is they both will get me flowers from their garden, then bring it. So what I do is I take those flowers and I put it in my hair. ऐसे. So then they feel very good. So what they do is every day they bring me a flower. It will be a rose. Otherwise, it is that white color flower that is easily grown in their garden. So they get me that. Otherwise, it is some of the things that their parents make at their home. तो वो टिफिन में भर के लाएंगे और बोलेंगे मैम आपके लिए लाया है, खाओ. One of my students had also been to Mahabaleshwar recently, तो उधर से berries वगैरह लेके आए. So they are so मतलब एकदम ऐसे giving and they love me बहुत ज़्यादा. Also what some of my students do is parents का फ़ोन लेते हैं, Instagram पे जाते हैं, they'll find my account, उधर से फोटोज लेंगे, स्क्रीनशॉट्स लेंगे, उसका प्रिंट निकालेंगे, उससे कुछ हैंडीक्राफ्ट ऐसे things they will make out of it, and then they bring and give it to me.
And when they check from Instagram whether ma'am has posted something about it or not, then they will reply from there, ma'am, I am so and so, and then thank you that you loved it so much. I am very happy. तो ऐसे कुछ ना कुछ वो हर रोज लाके दिखाते रहते. And my students also, they are so, I mean, ये normally कभी कभी सिखाते वक्त I use ऐसे stick, but not for beating, but then just to, you know, थोड़ा उनको ऐसे deterrence के लिए या फिर जैसे थोड़ा डराने के लिए, वो ऐसे नहीं मारू का काटे नहीं असर. But then what they do is they know what is the importance of that, क्योंकि उसके बाद वो अच्छा करने लग जाते हैं. So they will, जो हमारा ग्राउंड है उधर they will start finding sticks. इतने बड़े बड़े स्टिक्स होते हैं, खुद आके दिखते हैं, मैम ये लो आज आपकी न्यू स्टिक दिए, ये करो. मतलब दैट सो, ये उनको कॉन्फिडेंस भी है कि मैम हमें इससे कुछ करने वाली है नहीं, बट मैम के हाथ में लकड़ी होनी चाहिए. ऐसे बच्चे हैं. मतलब फॉर्चुनेटली वेयर डू यू गेट व्हेन किड्स ऑफ दिस काइंड, है ना? Wait, no, they are brilliant. They are very hard. When I sit down, प्यार करते was. Srishti, you're so young. You already have had such a colorful life. You've grown from very, difficult situations to be where you are. And you have gotten so much love. I mean, it's very different kinds of experiences. It's such a colorful life that you are leading. Srishti, आपने 2-3 चीज़ें कही. एनसीसी के टाइम में आपने कहा कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर रही थी, राइट? और अभी भी आपने कहा कि जब आप कराटे खेल रही थी एंड फर्स्ट यू फेस सम फेलियर्स, देन यू आल्सो वर्कड ऑन योर शॉर्टकमिंग्स. इन सब चीज़ों में मेंटर्स का क्या हाथ रहा है आपके लिए? क्या कोई था जो आपको हेल्प कर रहा था थ्रू ऑल दिस? Where to improve, what to do in certain situations? तो सबसे पहले तो मैं अभी आरडीसी के इसका ही बात करूंगी, बिकॉज RDC में I met Colonel Shekhar. So he was my mentor throughout the journey. He brought out the side in me which even I was not aware about. Okay, so he first and foremost taught me that you have to believe in yourself, be confident about yourself. You came from a sports background, so then adapting to all of this, that is, in West Canada I had to give lectures, then were group discussions. So I had to express my opinion in that. In interview I had to communicate, I had to express myself. So वो मेरा थोड़ा पार्ट ऊपर नीचे होता रहता था. So then he was the one who pushed me, made me talk. I used to practice with it. He used to take our lectures, group discussions. Now this is very specific related to the best cadet competition, but then throughout this he also made me aware about the things that I was not aware of. मतलब जो पोटेंशियल था मेरे अंदर उसको उन्होंने पहले ही परख लिया था, एंड देन ही वाज जस्ट रिफाइनिंग इट. सो उनका रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इफ ही वुड हैव नॉट बीन देयर, मे बी जो ये मैं आरडीसी उधर तक पहुंची थी, मे बी दैट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल, और इतना इफेक्टिवली और अच्छे से मैं परफॉर्म भी नहीं कर पाती. एंड नॉट जस्ट इन बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन, बट ही हैज हेल्प्ड मी थ्रू आउट. कोई भी you take any problem and go to him, he'll solve, he'll be there, he'll listen, he'll not judge you. So then all of this plays a very important role, because when you know that you have a person to whom you can go express, and then he is going to give you the proper solutions and how you should do about it. So मतलब अगर ऐसे पैनिक मोड ऑन हो जाता था तो आई यूज्ड टू गो टू हिम, वी यूज्ड टू गो टू हिम, और फिर हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी. एवरीथिंग यूज्ड टू सीम वेरी इजी आफ्टर टॉकिंग टू हिम. सो ही वाज द key factor for me in RDC, and even now I am in touch with him, and he is my mentor for life, I would say. He is one. Second, school में टीचर्स जो थे मेरे, उनको मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास था. मतलब they used to always appreciate me, admire me, क्लास में हो या फिर कुछ भी ऐसे. They called me ऐसे you are ऐसे अनमोल रसन, है ना, ऐसे बोला है मुझे literally. My vice principal had mentioned in the school magazine कि Srishti is the cherry on the cake, ऐसे. But then teachers were so supportive. I mean, I've always received the support of my teachers and their love in abundance, बहुत ज़्यादा. So that actually motivated me in a very positive way, and because of that I feel I did not get distracted, and I was even ground to earth and the grounded person I am. And उनकी वजह से मैं बोलूँगी कि I stayed in that loop of just doing things one after the other, and not just at a time as being stagnant. So I was always improving because of them, and
टीचर्स का रोल इज वेरी इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली सृष्टि, टीचर्स मेंटर्स जिंदगी में होना जो आपकी जिंदगी को एक दिशा दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या आप सही कर रहे हो, क्योंकि आप उस टेंडर एज में भी हो जहाँ पे आपको वो समझ नहीं है। तो उस एज में ये गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि ऐसे टीचर्स है, ऐसे मेंटर्स है जो तुम्हें इस तरह से गाइड कर रहे हैं जो आपने बताया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर मॉम। व्हेन वी वर टॉकिंग बिफोर दिस इंटरव्यू, you mentioned how much of an inspiration is your mom to you. Tell us a bit about that. What exactly is that about her that inspires you the most? What kind of strength does she give you? So mom, मतलब अभी जो भी मैं कर पा रही हूँ is everything because of what my mom wanted me to. Otherwise, it is because of her upbringing that I could reach till this level, and I am aiming for higher things. So yeah, but then the reason is my mom. Everything that I do is to see the smile on my mom's face at last, because that is what gives me satisfaction, and that is my top priority. मतलब जो भी करना है mom के लिए करना है, she has to be happy. Now my mom is a single parent because I was born and brought up in Pune itself, but then my entire upbringing is done by my mom, and I stay with my maternal grandparents. So for me, she is a very strong and independent woman, because बचपन से मैंने देखा है कि she has been taking her decisions on her own, and she has been able to balance and manage all the finances very well. And मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी है, कभी नहीं। मतलब इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। She never said no to anything that I wanted at any point of time, and जो भी मिला है ज़्यादा ही मिला है। And she never said no to any new thing that I want to try. मैंने अगर बोला मुझे ये सीखना है, yes you can go learn. I want to learn this. Yes you can go and learn it. तो कभी ऐसे रोक टोक भी नहीं की है. She had put restrictions on me, but then that were for my benefit, and then those restrictions were not anywhere hindering my growth. So that is one thing about her in my this, but then she is a motivation and inspiration for me because she has done many sacrifices so that I could do my things. May it be, not buying some things for herself and then keeping or saving that money and getting things which I was, desiring. So ऐसे सब चीजें, and I think if it wouldn't have been my mom, तो मैं अभी इधर तक नहीं पहुंच. तो yeah, and अभी भी आगे भी जो करना है, it is just to see that smile and satisfaction on her face कि मैंने लड़की को बहुत अच्छे से बड़ा किया है. It's very heart touching when you talk about your mom. I am a mother, and I would like to raise a child who is, like you maybe someday, and who is disciplined, who stays on the path. You get mentorship, you have these mentors, you have your mother to support you, but Srishti, it's also you who is doing all those things. There's a reason why they're supporting you, right? So it's all of you together that makes Srishti today, right? What it is according to you that defines Srishti? I would say I am a very confident person, but at the same time I'm very grounded. I would say I'm more of a grounded and humble person. If I had to define Srishti, grounded and humble. Okay. And also I would like to add that I am more of an explorer kind of a person. I like to explore new things, and that would go hand in hand with me wanting to travel places. Yeah, that would be. Tell us about your traveling adventures then. I saw you were traveling solo before a few days. How was that experience? What made you do that? I decided to travel solo because my mom had gifted me a bike 2 years back, and I had not actually been on a very long ride after getting it. So I decided it very spontaneously. I want to go on a ride, and this time I wanted to be solo. Because when you travel solo, I feel you make decisions based on the situations you are in. So you get to learn a lot, because then there is no one to, tell you, and you have to analyze everything, take the decisions, and that is completely your decision. So you analyze everything. So for that, when you start analyzing, that is the time when you get to learn things as well. So that is one thing. Second was, as I said, I am very keen on trying new things. So I just wanted to see कि कैसे होता है ये solo ride. So then I just decided I went on a solo ride. Third is that I wanted
some me time. I mean, I have been into this RDC preparation for almost 7 to 8 months. So then just to get a break from that, to rejuvenate myself and then again get back into studies, I just needed a break. So then I decided it will be only me and my bike. So that is how this traveling solo thing came up, and then I traveled to Ujjain, yes, because I worship Lord this Mahadev. So that is how. And then my mom was also quite supportive. She was initially a bit worried, but then I kept her posted, as I was traveling, and then it was all okay. I reached safely home, and also if अगर जाना, it was almost 600 kilometers from here till Ujjain, and then coming back. So then at that time, I had to make some modifications on my bike also, like putting the fog lamp and also having a box in the back. So ये सब चीजें प्लान करना और फिर मतलब समझ के लेना, एंड देन दैट इज हाउ यू गेट टू लर्न, आई फील. तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आई विल बी डूइंग मोर सोलो ट्रिप्स इन द फ्यूचर एज वेल. सृष्टि, आपने फाइटर मूवी देखी है? No, I have no. Okay, so I want to tell you something from the movie that stuck with me. It's about Deepika Padukone's character. So she faces a lot of problems while getting into the army. So it's about her family. They do not support her. And that made me very, very sad. मैं एक millennial हूँ. I think millennials have had their fair share of, not getting enough support from the family, और जो एक सोसाइटी का परसेप्शन है विमेन को देखने का कि एक लड़की को क्या करना चाहिए, ये मिलेनियल्स ने मेरे हिसाब से काफी देखा है. आप एक जेनजी हो, आपको क्या लगता है कि आज एज अ जेनजी आपको भी ये सोसाइटी परसेप्शन का बोझ लेना पड़ता है? क्या चीजें बदल चुकी है या इट्स मोर और लेस द सेम? अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने अभी तक मतलब मेरे सराउंडिंग्स में या फिर मेरे विसिनिटी में ऑब्जर्व किया है, तो आई फाइंड कि most of them are supportive at this age, because in this generation of mine I feel, क्योंकि अभी लड़कियां भी खुद के लिए एक मतलब आवाज उठाने लग गई है, या फिर they have the position that नहीं मुझे ये करना है, they have it. तो अगर वो डिमांड कर रही है वैसे, तो आई थिंक वैसे सपोर्ट भी मिल रहा है. What parents mostly expect is that मतलब for their daughters is कि they should have a secure job, ठीक है. उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वन मोर थिंग, तो वैसे भी वो अच्छे से ये होने चाहिए. तो आई फील उस हिसाब से then they stopping girls into getting into the forces maybe is because see Indian Army is giving much opportunities for women to come and join in. I would also like to share in this podcast कि Navy के जो special forces है Mar Force, so even that is open for women officers now. So then women are being given opportunities. They just have to prove themselves that they fit into the criteria of whatever that job requires, and then they can have it. ऐसे तो there is a change in that as well. And I think कि ऐसे जैसे ये मूवीज आ रही है अभी हम लोग भी देखेंगे कि we see women in combat roles ज़्यादा in movies. That has a positive impact. मतलब movies देख के भी ये होता है. या फिर even if we talk about it, our first lady IPS officer Kiran Bedi. So then even she was, an inspiration. So girls just have to have a role model and then they start following her. So may it be in sports or even in this field. तो अभी ऐसे लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं. मतलब women officers we have ऐसे role models. तो उनको देख के even the society starts changing their perspective. और मतलब ये example एक कर्नल शेखर ने खुद हमें दिया था कि जो एक एयर स्ट्राइक थी. I'll not get into the details. So then India had an air strike on Pakistan territory. So then that time the women behind the ATC was the main she was the main element I would say in that entire operation जिसकी वजह से वो successful हो पाया. So then there are women behind such big operations as well. ठीक है. तो ऐसी चीजें होती है. तो बस उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है and some support from the family, and even if they don't get support, I think they should stand for themselves and do what makes them happy. I think आपने बहुत अच्छी बात कही. चाहे हमें सपोर्ट मिले ना मिले, किसी को भी हमें अपने आप के लिए स्टैंड करना चाहिए एंड फॉलो आवर ड्रीम्स. लेट्स मैं सोच रही थी कि हम ये सब गोल्स रखते हैं हमारे लिए, हम हमेशा देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए. रिसेंटली एक कोट पढ़ा मैंने फ्रॉम एनी डिलर्ड, हाउ वी स्पेंड आवर डेज इज हाउ वी स्पेंड आवर लाइव्स. सो हम हर रोज क्या कर रहे हैं, समवेयर दैट हैज एन अफेक्ट
ऑन हमारा गोल क्या है. एज अ जेन ज़ी, आई एम श्योर यू आर ग्रैपलिंग विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स विद लाइक सोशल मीडिया, इज एस्थेटिक्स, कि कैसा चीज़ें दिखनी चाहिए. आप यू वांट टू डू अ लॉट इन योर लाइफ. आप वो सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं? See, social media for me is just a place where I share my life. ठीक है, तो it is up to me at the end of the day how I have to take it or how I have to use this social media platform. Now what I have experienced up till now is कि मेरे जो friends या फिर जो भी follow वगैरह करते हैं, so they mostly are inspired at a level. They get inspired. It is like because I have received messages from many girls and even boys कि they are in complete awe how I do things या फिर कैसे कर पाती हूँ. But of course I not share my nose there, right? And I share only things which I think people should know. तो जो मेरे personal matters होता है that I don't bring up on social media. तो बात ऐसी है कि सोशल मीडिया पे जैसे दिखता है सब वैसे नहीं होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर फेक देयर एंड इन पर्सन दे आर समथिंग डिफरेंट. तो वी शुड नो एंड वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट कैन बी फेक एंड व्हाट कैन बी रियल उस पे. और आई वुड सजेस्ट जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है कि डोंट कंपेयर योर लाइफ टू एनीवन. अगर सोशल मीडिया पे कोई दिखा रहा है मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, या फिर समथिंग इज बोस्टिंग, or maybe he's not boasting, he's just sharing it, but then don't start comparing yourself with that and don't get into the negativities of social media. Try and learn positive things from social media. मतलब कोई quotes हो या फिर any peer sharing things या फिर just someone is sharing their life and you can draw inspiration from it. So then बस वो positive चीजें देखो, वो बंदे को उसकी लाइफ जीने दो, आप अपनी लाइफ जियो, ठीक है. एंड आई वुड ऑल्सो से कि अटेंशन स्पैन वगैरह भी बहुत कम होता है. मतलब सोशल मीडिया हैज नेगेटिव साइड्स ऑल्सो. देन इट इज बेटर टू गेट योरसेल्फ इनटू मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज एंड ऑल देन टू जस्ट scroll through reels on Instagram. But then that is again a personal choice. You should know what suits you the best, but then make choices which are beneficial to you and your health. I love the clarity that you have for your life, in general for your life. It's not just about social media. For you, things are different. You have a defined goal for what social media is supposed to be in your life, and you have, of course, your goal in life, that's what you want to be. So that's really great to hear, and it is really inspiring to talk to you. The way you do things, the way you approach things, there's a lot to learn. Just want to say that so proud of you that you are here, and I think those were all the questions that we had. Thank you for answering all of them. Let's move on to our next segment, which is called Rapid Vichar. It's like a rapid fire, so you have to answer the questions like really, really fast and with a lot of fire. Okay, let's start. Are you ready? Yeah. Yes, all set. ओके, सो मैंने देखा है फ्रेंडशिप्स का भी आपकी जिंदगी में काफी मायना रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Friendship is caring, according to me. Yeah, so my friends have been very caring and supporting. There are people who tell me that, oh, maybe this is not you. My friends will be the one pushing me, no, yeah, you can do it. Before even I realize it, it is them who know that, हाँ सुनती ना ये कर लेगी यार, तू ये कर. Otherwise, there are also some of my friends जो मुझे दे भेजते हैं, यार सुनती तू ये कर ले, तुझसे हो पाएगा. So then I've found friends like this who are supportive and they're there every time. So yes. So sweet. Drishti, you have such an inspiring story. आपका क्या वो एक मैसेज होगा to all the young girls out there? I would tell them that seize the opportunity. Opportunity will not walk to you. You have to create opportunities for yourself. Make the best out of it. Don't give up. Keep going. और खुद पे भरोसा रखो और सब चीजें हो जाएंगी. बस don't give up on yourself and fight for whatever you want to achieve in your life. Great advice. थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ते हैं. आपकी फेवरेट आर्मी मूवी कौन सी है? I would say Uri because that was the one that I saw. उसके बाद थोड़ा
इतना मूवीज देखे नहीं है, बट देन दैट वाज द वन आई वाज पूरी। और अभी हाँ रिसेंट मैंने सैम मानेक शो भी देखा, तो इवन दैट इज अ गुड मूव। आई मीन इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम इट। तो यस, आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। You have to tell us why. I mean, we all love Dhoni, but what's your reason? What actually attracted me towards him was that he is very calm. As we know, we call him Captain Cool, right? So I love the way he handles pressure or situations which are tense. ऐसे. So then that is something that I would like to learn. कोई एक स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो आपकी ट्रेनिंग के दिनों से जो आपके साथ रह गई? Training days. So that would be सुबह जल्दी उठना पड़ता था ड्रिल के लिए, है ना? तो इट वाज अराउंड 4 समटाइम्स और इवन 5। तो हम लोग क्या करते थे कि ड्रिल के लिए जल्दी ना उठना पड़ा, और हम लोग थक भी जाते थे कि बिकॉज बीइंग इनटू द वेस्ट कैडेट इवेंट वी यूज्ड टू स्टडी इन एट नाइट। तो हम लोग 2-3 बजे तो सोते थे पढ़ के, एंड देन वी हैड टू गेट अप अगेन एट 4 और 5। वी हार्डली यूज्ड टू गेट 2 or 3 hours of sleep. Then sometimes हम लोग ऐसे मखरा मारते थे ना, मखरा इसकी मतलब पैर में दर्द कर रहा है, ऐसे होता है तो आज ड्रिल नहीं हो पाएगी ऐसे। बट देन इवन हमारे जो PS स्टाफ थे, दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये मखरा मार रहे करके। इवन दे केम अप विद थिंग्स कि जो भी हो, इधर आके आपको खड़ा तो रहना है, ड्रिल मत करो। सो देन वी डिड नॉट गेट टू स्लीप ऑल्सो। वैसे हमको बाहर तो आना ही है, so that is something that I will remember. And obviously the times spent with my buddies, that is something वो तो बहुत सारे events हैं, मतलब एक दूसरे की मतलब एक दूसरे का मजाक उठाना, दूसरे को इसलिए चिढ़ाना है। Yeah. कौन सा पोस्टिंग लोकेशन आप चाहते हैं कि वो आपका फर्स्ट रिपोर्टिंग स्टेशन हो? जम्मू एंड कश्मीर में वो फील I would love to get posted. जन्नत। Yes. Heaven. सृष्टि, आपके पास एक पेट है, सुपर क्यूट, 2 पेट्स है। Why do you think you have a need to have a pet? So I'll actually tell you the incident. मतलब जैसे क्या हुआ, और फिर I got Coco. So I have a golden retriever, मेरी golden retriever. तो 10th के बाद holidays start हो गई थी, and then all of a sudden one day I decided कि मुझे dog चाहिए, because I actually have a very good bonding with animals, I would say. और जैसे मैं मेरे 10th क्लास में मेरे ट्यूशन्स को जाती थी, so then travel to the I had to cross the railway line, and then my class was there. So then from home up to that railway line, I was followed by some dogs. तो जैसे plus security रहती थी उनकी, मैं always bonded with dogs. I loved them, and they are very selfless creatures. मतलब खुद से प्यार देते हैं, they are loyal, they are honest. वैसे मतलब loyal, yeah. तो उस हिसाब से I always like dogs, I love dogs. तो एक दिन मैंने डिसाइड करने मेरे को डॉग चाहिए, and I started in the morning, I started convincing my mom to get me a dog. तो मैंने एक पॉइंट में मैंने मॉम की पैर ही पकड़ लिया। I was like कि नहीं, आई वाला डॉग पाहिजे काय पण होऊन देत। तो मैंने छोड़ा नहीं, मतलब मैंने गिव अप नहीं किया। शी वॉज वेरी रिलक्टेंट एकदम कि हिंकी लेना है डॉग, इधर रख नहीं सकते, ऐसे वैसे कौन संभालेगा, कैसे होगा, ये सब चीजें थी। बट आई सेड नो, आई बी द वन, आई टेक केयर। मैंने इतना तक बोला कि अभी मेरे 12th के बोर्ड आएंगे, तब मुझे पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, डॉग रहेगा मेरे साथ, आई विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, उसके साथ मैं पढ़ूंगी, ऐसे वैसे। छोड़ा ही नहीं मैंने शाम तक। आई वॉज बिहाइंड मुझे डॉग चाहिए। Next day, then we contacted the pet shop. They had a puppy available, so they called us for seeing it. And then when we saw it, it was Coco, and I decided that we'll bring him home. And then that is how Coco became a part of our lives. Or I have a cat also. So Cherry came into our family after 2-3 years. We got Coco. उसके बाद Cherry was there. Cherry came. तो चेरी के लिए तो मुझे बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ी थी, बिकॉज आई फाउंड चेरी एंड शी वाज 45 days एंड बारिश का सीजन था, सो इट वाज रेनिंग हेवीली, एंड देन समवन हैड जस्ट लेफ्ट हर इन द मंदिर वेयर आई टेक क्लासेस, तो उसको अबैंडन कर दिया था किसी ने। तो आई टुक हर, आई केम होम,
एंड आई वाज एक्चुअली वेरी, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे ये रिफ्लेक्ट, आई हैड टू हैव अ डॉग एंड अ कैट टुगेदर, तो वैसे गोल्स टाइप है ना, दोनों साथ में रह रहे हैं ऐसे कंप्लीट फैमिली ऐसे टाइप का। देन आई डिसाइडेड, तो मैंने गाड़ी से घर पे आते वक्त ही मैंने डिसाइड कर लिया था, और फिर मैं प्लान भी बना लिया था कि घर पे बोलूँगी एडॉप्शन को देना है, तो 2-3 दिनों की नहीं रहेगी ये बिल्ली, उसके बाद तो दे देंगे। तो मैंने एडॉप्शन के लिए तो किधर शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। एंड देन 2-3 दिन आई क्लीन एवरीथिंग, मतलब चेरी का जो भी था आई क्लीन इट, एंड देन आई बॉन्डेड चेरी एंड पोपो, वो साथ में भी रह रहे थे। पोपो इज तो वेरी फ्रेंडली व्हेन इट कम्स टू कैट्स, ह्यूमंस और इवन डॉग्स, ही इज नॉट एग्रेसिव। और चेरी बहुत छोटी थी तो उसको डॉग्स ऐसे एग्रेसिव होते हैं ये पता ही नहीं होगा, सो इवन शी बॉन्डेड विद पोपो। तो वो एडॉप्शन का दिन तो कभी आने ही नहीं वाला था, वो तो ऐसे भी नहीं आया। फिर घर वालों को थोड़ा कितनी अच्छी बिल्ली है, सुंदर है, देखो दोनों कैसे अच्छे से रह रहे हैं साथ में। तो फिर फाइनली चेरी इज ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। इट इज गुड टू हैव पेट अराउंड। And that's such a heartwarming story. I think this is the heartwarming story we can end Rapid Vichar on and move on to our next segment. Our next segment is called Vichachits. So, Drushti, we have prepared a set of questions for this segment, and one of them are our chits here. We use these questions to bond with our guest and as well as with our audience, right? So I'm going to pick a question for you and you have to answer that. That question is also for our audience. Okay. So the question is, what would be your dream vacation and why? My dream vacation would be, firstly, it would be Iceland. I am so fascinated by this northern lights, so I want to see them. Other one would be Japan. I would want to visit Japan. And just for some days, I want to explore the whole of Japan. So then, these are 2 places I want to go and visit. So Srishti, that was the interview. Thank you for being here. Your story is very inspirational. Thank you for. I'm sure some young girl is looking at this and thinking, I want to be like Srishti. And thank you for sharing your story that the way you did with so much fun and so much rigor that you have, so much energy that you have. I love to have you on the show. Thank you so much. Thank you for having me. So दोस्तों, ये थी सृष्टि मोरे। सृष्टि की स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। मुझे पर्सनली सृष्टि से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उनका डाउन टू अर्थ नेचर, कंसिस्टेंट फोकस टुवर्ड्स हर गोल्स और उनकी क्लैरिटी अबाउट लाइफ मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी। आई होप आप भी सृष्टि की स्टोरी से इंस्पायर हुए होंगे। गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो टू मेक द एल्गोरिदम हैप्पी। स्टे ट्यून फॉर अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी ऑन विचार वाइब्स। Like, share and subscribe to our channel Vichar Vibes.